पे आए हुए सब अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं. आपका बहुत 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 आभार. And I see a host lot of players, officials, everybody who's connected with Kho Kho. So before I say something, can I say, let's Kho! Let's Kho! Let's Kho! ये जोश है खो खो का. आप लोगों को शायद नहीं पता हो, खो खो has a long history. It starts from Mahabharata, but in the modern times, in 1936 Olympics, Kho Kho was a demo game. It goes that far. It was on the verge of being included in Olympics, but something happened. Kho Kho Federation of India has been in existence for a long time. We've had 56 national championships. बहुत पुराना खेल है, क्योंकि ये माटी का खेल था. हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर धानी आपको एक खो खो का खिलाड़ी जरूर मिलता. मैं जब भी किसी से बात करता हूँ खो खो के बारे में, आई सी अ ग्लिंट इन द आई. वो कहता है मैंने भी खो खो खेला है. अभी मुखी जी कह रहे थे, कलराज जी कह रहे थे, रजत ने भी खेला हुआ है. खो खो हैज बीन अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ अस. क्यों? क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते थे खेलने में, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता था खेलने में. तो जहां गली मोहल्ले में लोग इकट्ठा हुए, चलो खो खो खेलते. ये अपनी माटी का खेल है. इस माटी के खेल का सफर मैट तक का, ये भी बड़ा रोचक सफर है. मैं यहाँ अपने सहयोगी, अपने साथी, अपने दोस्त MS त्यागी जी को बुलाना चाहता हूं, जो कि सेक्रेटरी जनरल है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के. इनको खास तौर से क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि ये जो मैट का सफर है, इसके अगर एक कोई जिसको कि उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, दैट्स त्यागी जी. त्यागी जी हैज वर्क टायरलेसली टू एंश्योर दैट खो खो बिकम्स एन इंटरनेशनल गेम. मिट्टी में हमारा था, लेकिन मिट्टी की महक, उसका जो फ्लेवर है, वो कैसे मिट्टी से निकल के सारे विश्व में फैले. तो पहला कदम त्यागी जी ने उठाया कि भाई इसको मैट पे डेवलप करा जाए. ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड मैट है एंड इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैट. खो खो के खिलाड़ी के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है. एक, उसकी स्पीड. तो अगर मैट ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो स्पीड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और अगर बहुत हार्ड हो गया तो उसको चोट लगेगी. तो पता नहीं 25-30, त्यागी जी कितनी मैट आपने डेवलप करी? इसमें हम लोगों ने 80 to 90 इसका जो डेंसिटी रखा है, और ये हमने सभी डिस्ट्रिक्ट को एक एक दो प्रोवाइड किए हैं, और नियर अबाउट हमने 200 खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये मैट्स प्रोवाइड किए. ये तो मैट्स प्रोवाइड करे. कितने मैट्स पे आपने एक्सपेरिमेंट करा, अलग अलग डेंसिटीज से, बहुत करे, और बड़ी मेहनत से ये मैट डेवलप हुआ. फिर इसके साथ साथ ये रहा कि हर खिलाड़ी, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी है खो खो का, उसकी खेलने की उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ इंजुरीज. So the KKFI undertook a major program, जो आपने कुछ देखा भी, to ensure that the sporting life of a Kho player must increase from 5 years to at least 15 years. That's the resolve. So the stars you see today, hopefully shall remain stars for the one decade which is to come. And उसके लिए अलग अलग चीजें करी गई. इस खेल को बदला गया. ये खेल का ओरिजिन महाराष्ट्र, मध्य भारत में ऑर्गेनाइज खेल की तरह बहुत था, लेकिन इसको ट्रूली इंटरनेशनल ग्लोबल स्पोर्ट बनाने के लिए बहुत कुछ बदला गया. ये देख रहे हैं आप इसका साइज. पहले इसका साइज बड़ा होता था, उस साइज को रिड्यूस करा गया, ये देखते हुए कि टेलीविजन पे कैमरा कितने फील्ड को कवर कर सकता है. नंबर ऑफ प्लेयर्स वर रिड्यूस फ्रॉम 9, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव बीन रिड्यूस टू 7. 6 बैठते, एक पकड़ता है. उसका कारण यह है कि स्पोर्ट का स्पेक्टेटर इंटरेस्ट बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए. तो हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय खो खो टू बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल स्पोर्ट. यू हैव द रीप्लेज, यू हैव एवरीथिंग. द रूल्स वर चेंज्ड टू इंश्योर दैट इट शुड नॉट टेक टू लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ फाउल्स स्टॉपिंग द गेम. रिड्यूस द नंबर ऑफ फाउल्स and innovate something which really makes it very, very entertaining. I would not reveal what all we have done. You shall see that in the demo game we have. Before we launched the entire effort of taking it international, we first developed this as an international game. फिर एक चीज आई कि एशियन गेम्स को अप्रोच करा गया, एशियन ओलंपिक कमेटी को, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहलाता है, इसको मान्यता देने के लिए. एंड एशियन की जो ओलंपिक कमेटी है, विच इज कॉल्ड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इन 2018 recognized खो खो as a game of Asia, which is a big accomplishment for our game. Then came another turning point. I have Tenzing Nyogi here.
Tenzing is the CEO of Ultimate Kho Kho. Now, ladies and gentlemen, Ultimate Kho Kho was a turning point for this game. जो खेल अभी तक नेशनल्स या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचलित था, उसको टेलीविजन पे और सारे देश को दिखाने के लिए और विश्व तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास हुआ, उसका श्रेय जाता है तेंजिंग के पर. अल्टीमेट खो खो इंट्रोड्यूस हुई. एज CEO of Ultimate Kho Kho, Tenzing brought the glit, the glamour, the speed and the style to Kho Kho. Tenzing, a few words here on this. Good afternoon, everyone. Thank you, sir. I think this journey started 6 years ago, and what I see here right now just makes us swell with pride. Mati ka khel aaj mat pe hai. 9 members se 7 member, 6 franchisees. We are now, Ultimate Kho Kho is the India's 3rd largest non-cricketing sports league with 193 million cumulative views. I think the journey has been nothing short of a spectacle. I remember him and me sitting in IGI stadium, and we were trying to contemplate how do we reduce the size to get it to the camera angles. Finally, I think it was God's plan to make it, because there was one hole less in IGI stadium in order to dig the pole in. And somehow that happened. One thing led to the other. I can see Mohit there. He was an integral part for season 1 closing ceremony. And I think we've just done fantastic. Today, what you're going to see here right now, as far as the spectacle is concerned, I think it's going to take India by storm. It's by far the fastest sport that India has ever seen on ground. And congratulations, sir. Congratulations, Tyagi ji. Congratulations to everyone in KKFI and IKKF to putting this massive show. Just take a look around and you see all these flags. It's amazing. Mat, we all know now, but the journey from Mat to the globe was equally interesting. We had thought we've reached a certain level, but then there were dreams. The dream of having Kho Kho in the Olympics. The dream of having Kho Kho in the Asian Games. The dream of having Kho Kho in the Commonwealth Games. There's a very anecdotal story behind it. You see, we Indians love gold, and anything which is gold is very attractive. So he said, look, if Kho Kho goes to Olympics, 2 gold are guaranteed to India. So that's the love of gold which prompted all of us to dream about taking it to Olympics and the Asian Games and the Commonwealth Games. And from there, the endeavor to spread this game across the globe started. Tyagi ji took upon himself, and Bridge, 2 of them made this pledge that we have to make it truly global by creating the organizations there with the focus that these will not be organizations which are Indian-centric. The idea was that if this game has to grow, then the people of these countries must play the game. Not Indian settled, as I say, not H1B visa citizens of that country. It must be played by people of that country. So if it's Peru, then the Peruvians must play. If it's Brazil, then it's Brazilians. South Africa, South Africans. Germany, Germans. Korea, Koreans. The emphasis was that we must get this sport going amongst the natives of those countries. And the compliment to these 2 gentlemen, today it is played in 54 countries across this globe. And I am audacious to announce that by the end of 2025, we would have covered 90 countries across the globe. We are there in all the continents of this globe. That's the reach, that's the spread of a game जो कि भारत का अपना खेल है. As I said, we've always played games which have come from outside. It's a sheer delight to see our game being played across the world. Ladies and gentlemen, I will not hold you back long. It's a dream which is not just a dream, because as they say, we have a dream in the eye and fire in the belly. These dreams will be realities. So, Olympic 2032, we shall be a part of Olympic, because the spread, the agility, the speed, all the elements which are required. And now they've added something called viewership. This game is going to be telecasted live across the globe, and the so-called viewership shall be there. With these words, I thank you and I welcome you all once again for being a part of us. Thank you so much.